Hello friends, welcome back to the channel. I hope you are doing to absolutely great out today in this the modern digital era technology in the of the knowledge and the hello space and imaging this the pick up the phone and your phone is try to unlock it suddenly and regionally review the with the forget your password and pin and pattern your phone is completely locked. You have cannot have access to your photos, contacts, apps and any more important data is can really forecasting and stressful, right? Well, don't worry, because in this video I am going to the guidance you step by step and now the very easily to unlock and show the adults and the substitution and safe and legal way with the explorely different method that can help you reason and access your device depending on your phone types and situations. And I will the show you official secure method. We like using the Google accounts and built a recovery to simple the method of a method whether you are using and Android smartphone on any other. This device will be help to understand what to do when you go to logged and the how to prevent this problem in the features as well. Make sure you watch this video till the end because I will also share some very important tips that can you save you are from losing your data and help you avoid it to this situation again. And if you find this video helpful to the figure and data is very important for the let's start the videos. गेट द प्रॉब्लम्स योर नॉर्मल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फ़ोन में जो लॉक लग गया, आपके पास कोई भी कंपनी का फ़ोन है उसमें कोई सा भी लॉक लग गया तो टेंशन नहीं लीजिए. मैं इस वीडियो में जो ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, उस ट्रिक से आप बहुत ईजी तरीके से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, वो भी घर बैठे हुए. तो देखिए कैसे करना है. ऊपर स्वाइप अप करेगा तो नीचे आपको इमरजेंसी कॉल बटन का इमरजेंसी कॉल का बटन मिलेगा. इस पर क्लिक करना और यहाँ पर कोड डायल करना *7*0795623*7 और यहाँ पर 9 टाइम कॉल करना 1 2 3 4 5 6 7 टाइम कॉल करने के बाद इस कोड को डिलीट करना है और लास्ट कोड है *899 और हैश पे क्लिक करना है. ये मास्टर कोड है, इसको आपको कोड डालते ही इंजन मोड के पेज पे आ जाएगा. मैनुअल टेस्ट बटन पे क्लिक करना है. सेंसर ऑफसेट टेस्ट पे आना है, तीनों पर तीन बार क्लिक कर देना. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. देखिए क्लिक करने के बाद हम लोग कुछ और ही अदर ही पेज पे आ गए. और अदर पेज पे आने के बाद अब यहाँ से बैक हो जाना है, लास्ट में चले जाना है अदर ऑप्शन के पेज पे. अदर ऑप्शन पे जाना है कि स्टेटस पे चेक करना है, फिर यहाँ से फिर पास हो जाना है. आपको जितना भी प्रोसेस पास किए हैं कि नहीं किए वो चेक करने के लिए आपको रीडिंग और रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक करना. और इस पे क्लिक करने के बाद जितने भी फ़ोन में प्रोसेस किए थे वो सारा पास हो चुका है, ये फ़ोन अनलॉक हो गया. तो फ़ोन को चेक करने के लिए आपको बीच में होम बटन दिख रहा होगा, होम बटन क्लिक करें. देखिए दोस्तों होम बटन पे क्लिक करते ही ये फ़ोन अनलॉक हो गया. और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक भी डेटा डिलीट नहीं हुआ और ये फ़ोन बहुत ईजी तरीके से अनलॉक हो गया. तो दोस्तों आपका भी फ़ोन अनलॉक हो गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक फॉर वॉचिंग.